If you're thinning, you don't have to just sit there and watch it happen. You can actually stop it from happening. This is what you should research right now. Are you losing your hair but you're not sure why you are losing it? आपने सारे शैम्पू ट्राई कर लिए, ऑयल्स बदल लिए, अच्छा खाना खाना स्टार्ट कर दिया, लोगों के कहने से कुछ एक मेडिकेशन भी ले लिया, but still you are losing your hair. Now when people come to me and say, doctor, I have been losing hair, I have tried this, लेकिन मुझे नहीं पता बाल क्यों नहीं ठीक हो रहे. The most important thing which should come to your mind is hair loss can be due to the following reasons. Number one, न्यूट्रिशन. कोई न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है आपके अंदर, कोई मिनरल, कोई विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है. नंबर टू, हार्मोनल इम्बैलेंस. सी, ह्यूमन बॉडी इज अ बैलेंस थिंग. बहुत सारी चीजें जब एक साथ सिंक्रोनाइज्ड तरीके से परफॉर्म करती हैं तब हम नॉर्मली हेल्दी बिहेव करते हैं, मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहता है, हेयर अच्छा रहता है, स्किन अच्छी रहती है. देन डिफरेंट अदर प्रॉब्लम्स व्हिच आर स्पेसिफिकली हेयर रिलेटेड. नंबर थ्री कैन be epigenetic factors including stress, जो नॉर्मली आपको कोई दिक्कत नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर चीज के आने के बाद जैसे स्ट्रेस, ये चीजें प्रेसिपिटेट हो जाती हैं डोमिनोज इफेक्ट की तरह और आपको हेयर फॉल शुरू हो जाता है. एंड नंबर फोर, वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेयर, जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में DHT की वजह से एलोपेशिया एरियाटा में आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज बना लेगी जिससे हेयर रूट्स खराब हो जाएं एंड यू स्टार्ट हैविंग हेयर फॉल. Then other cicatricial alopecias, fibrosing alopecias which lead to hair loss. So agar we give attention to nutrition and hormone, because these two we can find out the problem up to a very large extent by means of blood investigations. Therefore, blood investigations in case of hair loss is of utmost importance. Believe me, I've seen prescriptions in which patients have come and showed me, doctor, I went to such and such clinic and got this medication, but I see that they did not get their blood work done, which is very important. What blood tests are important and what is the significance of those tests we'll discuss today in this video, so that by the end of the video you know exactly which vitamins, minerals, nutrients can be of problem here and how to find them out. Do subscribe to this channel for more such educational and informative videos. In maximum patients, the problem because of which hair loss occurs lies inside and it's not outside. So you cannot help much with shampoos and oils, but we need to pay attention to what is actually wrong with us. In that way, it is important that you know which blood test to perform and you see your doctor so that they can prescribe these blood tests for you. But for the time being, in this video, I want you to educate as to what all blood tests are required, so that you also know why we have to get them. Hi, my name is Dr. Preeti Saraswat. I am an American board certified hair transplant surgeon, which is now also known as International Board of Hair Restoration Surgery. And we've been performing hair transplants at our center as well as giving consultations for hair loss for more than 2 decades. Coming to blood test number 1, hemoglobin and serum ferritin. Why hemoglobin? See, oxygen carrying capacity is determined by hemoglobin. अगर मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी है तो मुझे बहुत जल्दी सांस फूलेगी, बहुत जल्दी मैं थक जाऊंगी और हो सकता है पैलर दिखने लगे, लोअर आईलिड बाहर करने पर थोड़ा सा देखने पे अंदर की म्यूकोजा पिंकिश या और पेल लगे. देन अदर सिम्टम्स कैन बी देयर. हीमोग्लोबिन की कमी से कई बार हेयर लॉस तो होगा ही, साथ में आपको ये वाले मेटाबॉलिक सिम्टम्स होंगे जो अभी मैंने आपको बताया. कई पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन अगर आप सीरम फेरिटिन कराओ तो सीरम फेरिटिन कम्स लो, नॉट इवन लो, लाइक सपोज द नॉर्मल लेवल of serum ferritin is from 10 to 210 nanograms per milliliter, but the patient has less than 70, then also they will have hair fall. This applies to both men and women. It is commoner in women because they keep on losing blood in the monthly cycles and therefore the tendency of having less hemoglobin and less ferritin is more in women. We need to get both hemoglobin and serum ferritin done. Blood test number 2, thyroid level should be good. Now in thyroid हम क्या टेस्ट कराएंगे? Serum TSH and free T3 and T4, so that we know exactly हमारा thyroid stimulating hormone कितना है and free T3 and T4 कितना है, जिससे हमें एक proper levels पता चलेंगे
देखेंगे अपने और ये पता चल जाएगा कि कहीं हमारी थायराइड ग्लैंड कुछ इम्प्रॉपर बिहेव तो नहीं कर रही, बिकॉज थायराइड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। हेयर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, बट ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी के लिए भी थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हो एंड यू स्टार्ट फीलिंग कोल्ड और यू स्लीप अ लॉट, you feel lethargic, you feel your hair is coming out like mad, maybe thyroid is at fault. Do not forget to press the like button. And now we come to investigation number 3. Investigation number 3 specifically is for vitamin D3 because it is the commonest cause of hair loss as per vitamin deficiencies. Vitamin D is required for a number of things in the body. Also hair के growth के लिए, hair की thickness के लिए, overall nourishment के लिए vitamin D is a must. Just next to vitamin D3, there are two things we should take care of. It is serum calcium and serum zinc. Calcium और zinc दोनों ही required हैं proper metabolism in the body and growth germ cells for the hair follicle also. So this completes test number 3, 4 and 5. Test number 6 is very important, especially for the vegetarians. It is vitamin B12. Now post COVID हम सबको पता है vitamin D3 की कमी लगभग सभी में आती है, except for those जो already थोड़ा D3 pop करते रहते हैं. Vitamin B12 is very commonly deficient in vegetarian people. Vitamin B12 support red cell production and scalp nourishment. Not only 70% of people in India are deficient in vitamin D, but you know vitamin B12 deficiency can also mimic thyroid symptoms. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आपको हेयर फॉल भी हो रहा है साथ में, you can share with us in the comment section below. Now the test I'm going to tell you now is holds great importance for females. It is important for men also, but for females it is of utmost importance. It is the hormonal test of serum testosterone, serum DHEAS, which is dehydroepiandrostenedione sulfate. Along with that, we need to get the blood test for serum FSH-LH ratio done on the day 2 of a female cycle. Why these tests are important? Because they tell us the hormonal status in a female. कहीं मेल हार्मोन तो नहीं बढ़ रहे जिसकी वजह से हेयर लॉस स्कैल्प का हो रहा है एंड मे बी एट द सेम टाइम एक्ने एंड फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है. ऑल्सो सीरम FSH-LH रेशियो इज इम्पोर्टेंट जिससे हमको PCOD के बारे में थोड़ा अंदाजा मिले. समटाइम्स स्कैल्प हेयर लॉस एंड फेशियल हेयर ग्रोथ आर दी ओनली सिम्टम्स जो ये बताते हैं कि PCOS हो सकता है पेशेंट को. अगर ऐसा है तो थिंग्स शुड बी टेकन सीरियसली एंड वी शुड act accordingly in the manner of treatment and medication. अगर आपके family या friends में किसी को ये problems हो रही हैं, do share this video with them so that they also understand the importance of blood investigations in cases of hair loss. Speaking of test number 9 and 10, fasting blood sugar and fasting insulin are very important to find out कि हमको कहीं diabetes की तरफ तो नहीं जा रहे, हम overt diabetes तो नहीं है, and fasting situation में इंसुलिन लेवल कितना है, ब्लड में कितना ग्लूकोज है, सेल में कितना ग्लूकोज जा रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग, ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ नॉट ओनली हेयर ग्रोथ सेल्स बट द होल बॉडी. इट हेल्प्स टू फाइंड आउट whether there is any insulin related problem in the body or not. So because fasting insulin blood sugar चाहिए and thyroid के टेस्ट भी fasting में ज़्यादा अच्छे हमको levels पता चलेंगे, तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप ये अपने टेस्ट fasting sample से ही करा लीजिए, except for the serum FSH-LH ratio which is to be done on second day of cycle. So that I put it in a box. This has to be done on second day and fasting is not required. Suppose I suspect PCOS in a patient, in a female patient, then I ask them to get a ultrasound of pelvis also done, and I specifically write down for the ultrasonologist that please mention the ovarian size and the number of follicles you detect at the time of sonography. Now coming to blood tests again, these are a few of necessary blood tests जो आपको कराने चाहिए अगर आपको hair loss है, and the results of these help us in improving the quality of hair because then we know which medication is to be used on priority so that the hormonal, the nutritional imbalance is corrected. और बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं but these are of utmost importance. So if you are still confused, you are trying a number of things, stop doing that, come to your hair doctor
doctor, get these tests done, and then get your treatment plan. For more information regarding hair loss treatment or hair transplant treatment, you can call us on the numbers below, or you can WhatsApp us your images on these numbers. If you want to find out which is the best protein diet for your hair naturally, click on the link on the left, and for a hair transplant case study video, you can click the link on the right.